Right, Raj, thanks for joining me. And now, an IndiGo flight traveling from Kuwait to Hyderabad made an emergency landing at Mumbai airport following a bomb threat. The threat was reportedly received via email at Hyderabad airport, prompting officials to divert the flight to Mumbai as a precaution. The aircraft has landed safely and been moved to an isolation bay for thorough security checks. Passengers are reported to be safe, while airport and airline authorities are coordinating with law enforcement agencies to investigate the threat and ensure the safety of all on board. I have Shahid Ansari joining me with more details. शाहिद, ये जो इंडिगो फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो मेल आया है उस मेल के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर जो है इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग उस मेल की बुनियाद पर की गई है। जो मेल आया है धमकी भरा मैसेज के बाद जो है लैंडिंग कुवैत से जो है हैदराबाद की फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। जानकारी में ये बात सामने आई है कि 2 दिसंबर सुबह 6:30 बजे यानी आज एटीसी के जो इन्फॉर्म किया उसके मुताबिक 6E1234 हैदराबाद जो कुवैत जो फ्लाइट है कुवैत से हैदराबाद की फ्लाइट उसमें जो है बम की अफवाह को लेकर ईमेल हासिल हुआ है, जिसके बुनियाद पर जो है इस फ्लाइट को जो है मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया गया। हालांकि इसके बाद जो है उसकी तलाशी ली गई, सब कुछ जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी तरह से जो है 1 से 1.5 घंटे तक चली, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिल पाई है जो ईमेल में जिसका जिक्र था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 5 से 6 घंटे इसके लिए खराब हुए हैं, लेकिन ये जो है एक तरह से हॉक से ईमेल है। अब मेल कहाँ से आया, किसने किया, इसको लेकर जो है तफ्तीश की जा रही है। जी शाहिद, ये जब ये हुआ तो ये पैसेंजर्स के क्या रिएक्शंस आए उस टाइम पे? देखिए, चूंकि जब ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है तो उस दौरान किसी भी पैसेंजर को इस बात की जो है जानकारी नहीं थी। जो एयरपोर्ट और उसके साथ साथ जो फ्लाइट पर जो मौजूद क्रू थे उनसे कई पैसेंजर ने उस दौरान पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी उनको नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया है कि कुछ इमरजेंसी कारणों से फ्लाइट को जो है यहाँ लैंड किया गया है, कुछ ही देर में सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि असंभव था कि अगर जो है पैसेंजर को ये बात बताई जाती तो उनके बीच में जो है भगदड़ जैसा या अफरा तफरी का माहौल हो सकता था। आमतौर पर ऐसे समय में पैसेंजर को जो है ये बात सिर्फ इमरजेंसी कहकर ही बताई गई थी, और इस दौरान भी चूंकि जब लैंडिंग हुई तो उसके बाद जब तलाशी अभियान ये सब कुछ पूरा हो गया तब जाके पैसेंजर को ये जानकारी मिली कि इस तरह से एक जानकारी आई थी कि बम की अफवाह थी। लेकिन जब सब कुछ सही हो गया तो उसके बाद उनको बोल दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक हॉक्स ईमेल था। जी शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए। नाउ आई हैव माय गेस्ट संजय Lazar, aviation expert, joining me. Sanjay, I want to begin by asking you, of course, now the IndiGo flight, there's been a bomb threat on it that we're discussing. What would you like to say on that? Well, I've also just heard about it, and a couple of hours ago, I believe that the aircraft has landed in Mumbai, diverted to Mumbai and landed because of an email that was received at Hyderabad airport. Now, typically a lot of these bomb threats are generally hoaxes, but knowing the safety protocols that airlines follow, there is no two ways about it that you have to divert and land at the nearest airport. I do hope that all the passengers are safe and sound and they've been evacuated, the aircraft checked, and hopefully will already have made their way back to their destination. Sanjay, now because you're an aviation expert, I want to ask you that normally when this happens, when a bomb threat is reported on the flight, what is the kind of protocol that is undertaken by the airline? Well, of course, there is a manual, by the Ministry of Civil Aviation and the Ministry of Home that deals with specific bomb threats. At a particular airport, a committee is formed headed by the head of the airport with the airline concerned, with the CISF team, and Ministry of Home and Ministry of Civil Aviation. If this is a serious level, it's raised to the center as well. On the aircraft, of course, the captain is intimated, and the captain intimates the cabin crew accordingly that whether they're going for a diversion or an emergency landing at that particular location. If the bomb threat is credible or deemed credible by the people reporting it, but none of this is communicated to any passenger, not to alarm them. Aviation, pilots and crew are, consummate professionals. They know what they're doing, and they deal with it,
in that manner. Other than that, when the aircraft lands, of course, there will be emergency services at the airport to deal with the aircraft itself. They do a thorough check. If there's an evacuation ordered by the captain, then post the evacuation. That's typically what it is in these kind of circumstances. And Sanjay, in most cases, some bomb threats are also hoax. So what normally happens, like if there's a bomb threat, does the airline immediately take action, or is it determined whether it's hoax or not? Does the pilot and the authorities take some time to determine that, or is this an immediate landing that takes place? Well, I'll just take you back a year. Last August, September, October, November, I don't know if you recall, we had more than, 600 odd bomb threats over those 3-4 months. And there were people emailing, calling, and the Ministry of Home and the Ministry of Aviation, put in place some stronger steps that unless there was specific threat perception and, a direct claim, they would, evaluate each bomb threat on a case-to-case basis. Now, in this particular case, the threat is supposed to have been received, at Hyderabad. So obviously, the email must have been very specific. Therefore, they've taken an immediate decision, and that the aircraft landed at 6:30. Mr. Nazar, we're unfortunately running out of time, but I'd like to thank you for joining me on the broadcast.